I've never had anyone complete the words I say. You told me the one you're with can make you feel this way. If the shoe fits, wear it. If there's no comparing. Welcome back to my channel and I am Nick and today I am vlogging because this is day 2 of mine in Goa. आज मैं एक्सप्लोर करने जा रही हूँ गोवा को एंड ड्यूरिंग मानसून टाइम. अभी हमारा प्लान था कि हम निकलेंगे एंड इट हैज़ स्टार्टेड रेनिंग अगेन. तो अभी हमारा प्लान 2-3 मिनट, पता नहीं जितनी देर बारिश होगी उतनी देर के लिए रुका हुआ है. देन वी विल गो आउट एंड एक्सप्लोर. So if you are new to my channel, don't forget to hit on subscribe button. और अगर आप पहले से मेरे सब्सक्राइबर हो, I thank you from bottom of my heart for showing your love and support. Do check out my video of staying at Taj Exotica this time in Goa, and this property is really beautiful. I will link the video here. Do check that out. So what we are waiting for? Let's get started with today's day. Just थोड़ी सी बारिश बंद हो जाए उसके बाद चलते हैं. So let's get started today's day. फाइनली रेन हैव स्टॉप. जस्ट 5 मिनट्स की बारिश थी और अब बंद हो चुकी है और मैं आ चुकी हूँ मेन एरिया पर जहाँ पर पार्किंग वगैरह होती है. आई वॉज वेटिंग फॉर कार्ट टू कम बट अनलकीली मेरे लिए कार्ट कभी मिलती ही नहीं. इतना टाइम लग जाता है आपकी सर्विस के लिए बहुत ज़्यादा. सो आई जस्ट लाइक वॉक एंड केम टू द पॉइंट वेयर आई नीड टू टेक द कार and it took approx 10 minutes to reach to the parking area. Whenever you are coming to Goa, you have two options. Either you can take a tourist vehicle or you can rent a cab. Basically you can self-driven car can be rented. So this time we planned ki let's go for self-driven car. So here is the car which we have taken. This is Baleno and it's like really when you are coming to Goa and to explore it, you will find tourist vehicle to be on costlier side, and when you are taking self-driven car, they are on like not on costly side, they are on affordable side. So I would recommend you should go for self-driven car if you know how to drive. This car costs rupees 1200 per day and petrol is on us, no other charges we need to give. So see what is the first spot for us to explore today. I know this could end in a catastrophe, but there's no other place I feel I should be. Tonight. We are headed to our first location in Goa other than beach, that is Cortigo Sanctuary. Yes, Goa do have a sanctuary. Monsoon में गोवा कितना सुंदर लग रहा है and it's so green. I'm just loving that green and monsoon vibes here literally. So let's just enjoy it. So we have reached to Cortigo Sanctuary entrance and यहाँ पर हमें टिकट लेना है जो है 100 rupees per adult and kids की है 50 rupees, and we need to pay the entry charges of car also at 100 rupees, and if you want to do videography तो कैमरा चार्जेस भी देने होते हैं ₹200. तो हमें यहीं जाना है. लेट्स सी how the ride would be और हमें क्या क्या देखने के लिए मिलता है. After paying the ticket, now we have entered to the sanctuary and it is little bumpy ride क्योंकि यहाँ पर perfect road नहीं बना हुआ है, and it took us approx 1.5 hours to reach here, and it is little far away from Taj Exotica Resort. It's approx 55 kilometers. अब हम पूरा forest के अंदर है, so just let's enjoy the forest and देखते हैं if we can spot something good here. तो हम आ चुके हैं सेंचुरी के अंदर और वी हैव ऑलमोस्ट ड्राइव फॉर 3.5 किलोमीटर. तो अभी हम एक पॉइंट पे रुके हैं, पीछे हमारी कार खड़ी है क्योंकि यहाँ पर एक रिवर क्रॉसिंग है. सो वी आर जस्ट चेकिंग कि अपनी कार लेके यहाँ से जाए या ना जाए, क्योंकि थोड़ा सा रिस्की हो सकता है और गाड़ी जो है रेंट वाली है. तो वी आर जस्ट थिंकिंग कि जाना चाहिए या नहीं, बस उसी का डिसीजन ले रहे हैं. बट लुक एट द वाटर फ्लो हेयर, इट्स रियली लाइक छोटा सा फॉरेस्ट के बीच प्रॉपर एक रिवर टाइप या कैनाल टाइप है, गिविंग सच अमेजिंग व्यू. मतलब मैंने ऐसी कोई चीज़ कभी देखी नहीं, एंड आई एम सीइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड इट्स लाइक
something different I'm exploring in Goa. This place is so peaceful and so quiet कि आपको फॉरेस्ट में और कोई आवाज़ नहीं सुन रही, सिर्फ आपको बर्ड्स और जो फॉरेस्ट की आवाज़ होती है वो सुनने को मिलती है, एंड दैट्स समथिंग डिफरेंट. क्योंकि सिटी में सिर्फ आपको ट्रैफिक या सिर्फ इंसानों की आवाज़ सुनाई देती है, यहाँ पर आपको बिल्कुल एक अलग ही वाइब्स और एक अलग ही आवाज़ सुनने को मिलती है. एंड एनिमल तो हमें कोई स्पॉट नहीं हुआ, बट डेफिनेटली आई स्पॉटेड डिफरेंट टाइप ऑफ बर्ड्स, सच ह्यूज बर्ड्स जो मैंने देखी नहीं थी, एंड बटरफ्लाइज ऑल्सो जो इतने बड़े बड़े साइजेस में थी. इतने में शॉट लेंगे दे फ्लू ऑफ, तो उनका मैं शॉट नहीं ले पाई, बट दे वर इन डिफरेंट कलर्स, कोई पर्पल, कोई ब्लैक एंड कोई पिंक, एंड दे वर सो डिफरेंट इन कलर. द बटरफ्लाइज वर सो ब्यूटिफुल. तो आपको कुछ एनिमल स्पॉट नहीं हो रहा तो कुछ ना कुछ ज़रूर आप देख लोगे डेफिनेटली. सो आई वुड रिकमेंड कि अगर आप बीच और ये सब देख चुके तो डू गिव अ ट्राई टू कमिंग टू अ सेंचुरी एंड यू विल लव दिस प्लेस. तो हम यहाँ तक आ चुके, अब हम वापस जाएंगे एंड लेट्स सी और क्या देखते हैं. After visiting Century, we decided let's go to Waterfall. Century के पास ही कुसुम के waterfall है, which is like a hidden waterfall, not known among very many people. आपको टूरिस्ट स्पॉट्स के अट्रैक्शन में भी नहीं बताते कि आपको उस वाटरफॉल पे जाना चाहिए. सो इट्स लाइक काइंड ऑफ हिडन जेम स्पॉट, तो वही हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं. सो व्हेन यू आर गोइंग थ्रू दैट वे यू गेट टू सी सो ब्यूटिफुल व्यू. और जो हिडन गोवा जो है एक्चुअल में विदाउट दैट बीच एंड एवरी वाइब्स, तो वो ये वाला गोवा पार्ट है जो बिल्कुल लाइक हिडन स्पॉट्स है. आपको यहाँ पर सिर्फ गिनती के 2-3 घर दिख रहे होते हैं, एंड इट्स जस्ट कवर्ड विद ग्रीनरी एंड मच मोर. तो व्हेन यू आर क्रॉसिंग इट आपको एक स्मॉल ब्रिज दिखता है, एंड लुक एट द व्यू हेयर. इट्स सच अ ब्यूटिफुल गॉर्जियस व्यू टू बी लाइक इमेजिन्ड और टू बी वॉच्ड. मतलब मज़ा आ गया व्हेन आई जस्ट सॉ दैट व्यू. Let me show you the view right now. Look at the water, it's so crystal clear and the color here, it's so like clear water. आप नीचे देख सकते हो, it's like this. तो नाउ लेट्स मूव अहेड, क्योंकि 8 किलोमीटर है अभी वाटरफॉल, तो टाइम लग जाएगा पहुंचने में, एंड इट्स ऑलरेडी 3 o'clock. तो चलते हैं जल्दी से. Remember we said with faith we tried to let this pass, and no matter how much we avoided we would still cross paths. तो हम आ चुके हैं कुसुम के वाटरफॉल, एंड इसके लिए आपको 10 मिनट की ट्रैक करनी पड़ती है आफ्टर पार्किंग योर कार, एंड नो 2-wheeler कैन ऑल्सो बी टेकन देयर. हमें ट्रैक करके ही जाना पड़ेगा ऊपर. सो वी हैव स्टार्टेड ट्रैकिंग, और आप एक छोटे से विलेज में से ट्रैक करके जा सकते हो. जैसे ये देखो मेरे साइड में घर है छोटे छोटे जो आपको घूम स्टाइल में दिखेंगे, एंड रास्ता कुछ ऐसा है व्हेन यू आर ट्रैकिंग up from here. Cross paths. If the shoe fits, wear it. If there's no comparing, this is true love, I swear it. I haven't reached the waterfall yet, but आवाज़ आ रही है, वो पता नहीं कितनी दूर और है. And definitely I won't recommend this waterfall for elderly people or people with small kids, क्योंकि it's really tough to walk on it, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टोनी पाथ है, and it's really like हाइट पे जाना है तो टायरिंग है. सो आई वॉन्ट रिकमेंड फॉर स्मॉल किड्स जिनको आपको उठा के ले जाना पड़े, क्योंकि यंग तो चले जाएंगे. आई थिंक दिस इज टिकट काउंटर और समथिंग लाइक दिस. Coming from ticket counter is just like 250 meters more, and now staircases have started. अगर आप सेंचुरी विजिट करके आपने वहाँ टिकट प्राइस पे किया है, so that ticket can be confirmed here, and you
don't need to pay again 100 rupees, so that's like win-win situation. But अभी मुझे staircase लेना है पूरा ये वाला, and I can hear the sound clearly of waterfall. Are you able to hear it? The weather is so good. अगर सोचो समर में ट्रैकिंग करनी होती तो I think then it would have been difficult, but monsoon के टाइम तो the weather is really good. And we need to make a choice right now. We know this could end in a catastrophe, but there's no other place I feel I should be. Tonight, 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 tonight. I'm still tracking up और सिर्फ आवाज़ें हैं, कुछ व्यूज़ आ रहे हैं, बट जो व्यूज़ देख के आई एम जस्ट सीइंग इट, इट्स लाइक वर्थ द ट्रैक. अब बस थोड़ा सा और फिर हम पहुंच जाएंगे. फाइनली आई हैव रीच टू वाटरफॉल आफ्टर ट्रैकिंग फॉर 10 minutes, एंड जितनी मेहनत की थी वो सब काम किया हुई, बिकॉज आई हैवंट सीन सच ब्यूटिफुल एंड बिग waterfall जो मैं ये देख रही हूँ. It's really really that gorgeous and pretty. Have you ever seen such big waterfall in your life? मैंने जो लास्ट वाटरफॉल देखा था वो जॉगनी वाटरफॉल या कैंपी वाटरफॉल देखा था. This is like first time I'm seeing a huge and such tall waterfall for first time in my life, and I'm really impressed. From my side, it's highly recommend. You should visit. It's worth the travel, worth the price. Really, it's so gorgeous. So let me enjoy waterfall, and then I will see you after some time. So let's go to main now. After seeing a glimpse from downstairs, now it's time to have the look from top. This place should be definitely in your bucket list. You will love it, I tell you. And look at it, the happiness on my face after doing so tiring trekking, and then watching this view is all worth it. Love the view. Do give a big thumbs up. Give a shout out to this beautiful waterfall. After having a really good experience at waterfall, and it was just like a jannat for me, frankly speaking. Now it's time to go back to my car because it's already 4:30 and ये 5 o'clock तक रहता है. And frankly speaking, except 3 of us, no one was there. So like it's monsoon time and it's forest area also, so you need to be little careful because I'm shooting while like going down, so that's why. So it's better we get down on time. Also make sure you are wearing good quality of footwear because the path is really stony and kahin se water stream aa rahe, so it can be little tricky when you're walking. You might enjoy yourself if you are not wearing good quality footwear. So I would recommend do have really good footwear when you are coming to this waterfall. Finally I have tracked down, और अभी जब आप waterfall के लिए जाते हो तो एक छोटा सा village आता है, तो so I'm crossing that village only. And एक और information that this waterfall is seasonal based, basically monsoon के time ही आपको ये waterfall देखने के लिए मिलेगा. So if you're planning कि let's come in November, you will not find the same waterfall here, because when we were coming down I just asked the reception person, ticket counter वाले भैया से कि ये waterfall all the season round है, just seasonal है. He said कि monsoon time है, even if it doesn't rain for 2 days you will not find this waterfall. So this waterfall has to be in your bucket list if you are coming to Goa during monsoon time, क्योंकि मैं तो explore करने आई हूँ monsoon time में. And गोवा की जो feel, charm और vibes है monsoon time पे, it's really all together on different level. It's so greenish and the weather is amazing, and एक अलग ही treat मिलता है इसको during
मॉनसून टाइम। और अभी हम आ चुके अपनी कार के पास। नाउ वी विल बी हेडिंग बैक। लेट्स सी विच इज़ द नेक्स्ट लोकेशन, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। जो विलेज है उसके एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ इट ऑपोजिट राइस फार्मिंग हो रही है। जो यहाँ के लोकल है दे डू द राइस फार्मिंग, सो दिस इज़ द होल राइस फार्मिंग फार्म्स। तो ये देखो आप ये भी नज़ारा ले सकते हो एंड जस्ट सी द व्यू, ग्रीनरी, देन राइस फार्मिंग, देन ट्रीज एंड देन माउंटेन्स। दिस इज़ द व्यू टू बी वॉच्ड।